चरना तेरा कलीहा, कीते बस हो जाए मन मेरा, सिर गुरु चरना तेरा कलीहा, सिर गुरु चरना तेरा कलीहा, कीते बस हो जाए मन मेरा, सिर गुरु चरना तेरा कलीहा, सिर गुरु चरना तेरा कलीहा। क्योंकि बगैर वो प्रेम प्यार जो हम दुनिया के वस्तु से जोड़ के दुनिया के लोगों से जोड़ के रखे हैं, जब तक वो संतों के गुरु के चरण में नहीं रख देते तब तक कामयाबी हासिल नहीं होती। Till we do not withdraw that love and affection which is there in the world outside and focus it towards the feet of our masters, we will not be able to get success on this path. क्योंकि दुनिया की तरफ मन मोड़ के, मुख मोड़ के, दुनिया से प्रेम प्यार करके, अंदर दिल में दुनिया को बसा के हम गुरु की कृपा चाहें तो हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। If we have the love of the world in our heart and we forever have the longing for all the worldly things and relations in our heart, but then we wish to have love towards our master, then that will not happen. देखो रामसिंह महाराज जी के समय में इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। व्यास के स्टेशन मास्टर वो बंगाली बाबू थे, वो शादीशुदा नहीं थे। During Channsandra Maharaj's time, there wasn't so much rush in the trains, and there was Bengali Babu at the station. तो कहते हैं कि उन्होंने जब से नामदान दिया तो पूरा बदल गए और जा करके जब नौकर एक रखे थे और नौकर खाना बनाता था, बर्तन साफ करता था, कपड़ा धोता था, आप स्टेशन मास्टर थे। तो जब आप जाते शाम को 5 बजे तो छुट्टी होने के बाद तो नौकर से कहते तुम खाना खा लो, मेरा खाना ऐसे ही रख दो। So
So Bengali Babu was the station master there, and after he was initiated, he had a servant, and that servant would cook his food and wash his clothes and take care of the house. So when he would finish his daily duties, he would go home. He would tell the servant to eat his food and leave the food for Bengali Babu in a plate. तो बाद में आप स्नान करके और सामने खाने की थाली रख लेते और ध्यान में बैठते थे, मन से कहते थे कि हे मन, जब तक तू नाम में स्थिर नहीं होगा, नाम का आनंद नहीं लेगा, तब तक तेरे को खाना नहीं देंगे. So he would keep that, he would have a bath and he would sit for meditation, and he would keep that plate of food in front of him, and he would tell his mind that till I do not get good intoxication in my Simran and Dhyan, till you do not get well connected with it. तो इस तरह से एक दिन शाम को 7 बजे बैठे हुए, सवेरा 6 बज जाता था और मन स्थिर नहीं होता था, मन सुमरन से जुड़ता नहीं था, तो आप खाना नहीं खाते थे, उठ करके गाय को खिला देते थे और स्नान करके चाय पी के ड्यूटी पे चले जाते. So sometimes it would happen that his mind would not listen and it would keep wavering, and from the time he would sit in the evening till 6 o'clock in the morning, it would not get fixated within. And in such events, he would not eat his food. He would give away that food and then get ready, have a cup of tea and go for work. कभी कभी शाम को 7 बजे बैठे बैठे मन के साथ लड़ाई लड़ते 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 वो सुमरन से जोड़ना चाहते हैं, वो दुनिया की तरफ भागता है, वो सुमरन से जोड़ना चाहते हैं, मन दुनिया की तरफ भागता है. यही मन के साथ लड़ाई करते हैं. बस धीरे धीरे जाके कभी कभी 3 बजे सवेरे मन स्थिर होता था, जब थोड़ा सुमरन से जुड़ता था, आनंद आता था, तब आप आराम से उठ के खाना खाते थे. So when he would sit from 7 p.m., the mind would many a times not listen, and it would keep drawing him out towards all the worldly matters and worries, and he would keep trying to do his Simran and Dhyan. But then the mind kept, this fight would keep happening, and until early morning at 3 a.m. he would sometimes get good meditation, and once he experienced that, only then he would get up and eat his food. और कभी कभी रात को 12 बजे मन स्थिर होता तो 12 बजे खाना खाते, जब तक उसको नाम का आनंद नहीं आता था, मन नाम से नहीं जुड़ता था, रस नहीं लेता था, तब तक खाना नहीं. So he would abstain from that food till his mind would enjoy that meditation. So until he reached that level of enjoyment in his meditation, he never ate his food or never allowed to have that food. ज्यादातर मन रोज सवेरे तक भी स्थिर नहीं हो पाता, तो इस तरह से गाय को खिला देते. इस तरह से करीब 1 साल मन के साथ लड़ाई लड़ी, तब जाके मन जो है सुमरन का रूप हो गया और जाप अजपा हो गया और वो चढ़ाई करने लगे. So this would happen quite often, and many a times the mind would not focus, and in the morning he would give away that food to the cow. Like that, this carried on for about a year, and eventually the mind started doing the Simran well, and that Simran became ajapa, it became continuous, and then his spiritual journey within began. इस तरह से 1 साल रात दिन मेहनत करने से, मन के साथ लड़ाई लड़ने के बाद मन जाके सबसे माने नाम से जुड़ गया, गुरु चढ़ाई कर गई, गुरु प्रकट हो गए और गुरु की कृपा से ज्योति अनंतनाथ प्रकट हो गए.
So like that, after fighting for a year with his mind, finally the mind got into the mode of meditation, and then he went within and he manifested the radiant form of the master within. तो कहते हैं कि ऐसे ही एक दिन भंडारे का समय था और करीब 1000-1500 संगत बैठी थी। रामसिंह महाराज जी का माने महाराज थे उस समय, और महाराज जी सत्संग खत्म होने के बाद में बंगाली बाबू को बुलाया कि बंगाली बाबू इधर आ। वो खड़े हो गए आके सामने, कहते क्या है महाराज? कहते माइक दो उसको, बताओ तुमने मन के साथ तुम्हारा मन बस में आया? कहते हाँ महाराज आया, लेकिन बड़ा तकलीफ दिया, बताए लोग को। So once when Ramsingh ji Maharaj had his satsang, Bhandara satsang, he called Bangali Babu, and he made him stand beside him, and he asked Bangali Babu in front of all of the Sangat whether he had got control on his mind. So Bangali Babu replied, yes, I have got control, but with great difficulty. So he said, okay, let everyone know. And he gave him a mic to speak in. And he said, you tell everybody how you achieved this. तो उन्होंने जो एक साल मन के साथ लड़ाई लड़ी, उन्होंने माइक में सबके सामने बताया किस तरह से मैं एक साल लंबी लड़ाई लड़के कितना दिन तो मैं उपवास ही ड्यूटी पे गया, सारा दिन उपवास रहा, और ऐसे लड़ के 1 वर्ष के बाद में मेरा मन मेरे बस में आया और आज मेरा मन स्थिर है। So on the mic he explained to the Sangat how he had achieved this, that it had indeed taken him 1 year to get this control on his mind, and many a days during this year he had gone hungry, and the whole day he would remain hungry because the mind would not get focused, and that way his fight with the mind went on for a year, and eventually he got control on the mind. तो उन्होंने जब सबके सामने बताया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो उनको गुरु के प्रति कितना प्रेम और प्यार है। रात भर मन के साथ लड़ाई लड़ते थे, भजन में बैठते थे, कितना बड़ा त्याग कौन कर सकता है जिसको गुरु से प्रेम और प्यार होता है। So the Sangat felt that indeed he has so much love and affection for his master, because he has gone through this hunger and sacrifice throughout the year. Only people who have that yearning to go within and that love for the master, the affection for the master, only such people do this, and that is how he has been able to go within, because he has true love for his master. तो कहते इस तरह से गुरुमुखों ने जो है कि रात दिन मेहनत किया, जागा, उपवास रहे, तो अपने मालिक के लिए, सदगुरु के लिए रोया रात भर, तब जाकर के धीरे धीरे उनको गुरु का दर्शन हुआ, मन स्थिर हुआ। So that is how the Guru Mukhs have done it. They have fought with their mind, and they have done their sacrifices, and they have kept the fight on with the mind, and finally they have been able to succeed in getting control over their mind. कहते इस तरह से जब तक कि हम मन के साथ लड़ाई नहीं लड़ते हैं और 2.5-3-4 घंटे की बैठक, क्योंकि 2 घंटे तक तो मन ही भटकता है, स्थिर नहीं होता है। 2 घंटे के बाद मन थकता है और स्थिर होना चालू होता है, तब तक हम भजन में नहीं बैठते तो सुमरन का आनंद कैसे आएगा, मन सुमरन का रोग कैसे होएगा। So you have to sit, to go within, you have to sit for 4 to 5 hours. The mind takes a long time to become still. It takes nearly 2 hours for the mind to become still and get tired. After the mind is tired, and it takes about 2 hours for that at least, then only we can start enjoying that Simran. Then only we can start enjoying that focus with it. क्योंकि मन दौड़ता है, बाहर भागता है, लेकिन उसको इसमें शरीर में आना ही पड़ता है, क्योंकि मन की लाज शरीर है। शरीर छोड़ के और नहीं जा सकता है,
दौड़ दौड़ के वो भी थक जाता है, फिर धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। So the mind keeps running here and there, but it cannot leave the body. It has to come back to the body, and that way it keeps doing this, and finally it gets tired after a couple of hours. It then stays still. जब मन नाम के रंग में रंगता है तो कुछ भजन का आनंद आता है और धीरे धीरे मन को भी उस आनंद की आदत बढ़ते जाती है। फिर एक दिन दुनिया से मन मोड़ लेता है और नाम से हमेशा के लिए जुड़ जाता है। So when the mind becomes still, then we start enjoying that meditation, that Simran, and then the mind also starts liking it. The mind also starts enjoying that meditation, and once the mind starts enjoying that meditation, then it does more and more of meditation. And then finally, once we get control on that mind by going with it. तो इसीलिए बगैर मन के साथ लड़ाई लड़े और बगैर प्रयत्न के साधन के कामयाबी किसी को हासिल नहीं हुई और आगे भी किसी को हासिल नहीं होगी। So without fighting with the mind and without doing that effort, without taking that trouble, no one has been able to gain a progress on the mind. Not till now, and it won't happen in the future also. तो कहते हैं कि इस तरह से प्रयत्न जारी रखना चाहिए, दिन दिन और समय बढ़ाना चाहिए। भजन को कोई बोझा नहीं समझना चाहिए। ये अपना सच्चा काम है जो कि परमात्मा ने मानव शरीर दिया है भजन करने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए। We must try to keep on increasing the time of our meditation, and we should not look at meditation as a burden, because this meditation is given to us so that we can get ourselves salvation from this world, from getting out of the burden of this world. क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज में सुख और शांति नहीं है, ना सुख दौलत में है, ना सुख मान बड़ाई में है, ना सुख राज्य में है। सुख और शांति उस नाम में है। जब तक वो नाम यानी शब्द प्रकट नहीं होता है, आपको सच्चा सुख शांति कभी दुनिया की चीजों में नहीं मिलेगा। Because we will not get any kind of happiness in all the worldly pursuits, because happiness is not there in wealth and riches, it is not there in status and society, it is not there in any rule, and the only happiness that we can possibly get is the happiness that we get when we get connected to Naam. That is the true happiness which we can experience. इसीलिए भजन सुमरन प्रेम और प्यार से करें, रोज रोज करें, और रोज रोज करने से ही कामयाबी होगी। थोड़ा दिन बैठना, थोड़ा दिन छोड़ देना, तो हम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। So we have to make it a point to sit for meditation every day, and if we do this for a few days, then leave it for a few days, then we cannot get success on this path. तो समय शांत है, वातावरण शांत है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम आँख बंद करके सुमरन और ध्यान से जुड़ें। The time is good, so let us make the most of it. Let us close our eyes and get connected to Simran and Dhyan.